social psychology. In social psychology, we are understanding the social behavior of a person. Now, social behavior of a person can be at two levels. One is your intrapersonal level within yourself. आपको गुस्सा आता है या आपका क्या एटीट्यूड फॉर्म हो रहा है या आप क्या इंप्रेशन किसी का बना रहे हैं, वो किसी को दिखता नहीं है, राइट? इफ समवन इज forming an impression about me, okay, what sort of teacher I am, the way I convey, the way I teach, the way I dress up, that impression formation I cannot see. What you all are understanding about me, seeing me here, I cannot see or understanding your behavior until it is conveyed explicitly, right? But that is your intrapersonal level. This is your psychological social psychology, right? Another is when you are showing a behavior at interpersonal level. Now what is interpersonal? Interpersonal is between two people, at least two people. You very well know that a group consists of minimum two people and maximum there is no limit. इतना सबको पता है. जिसने क्लास 12th में नहीं भी पढ़ी है सोशल साइकोलॉजी, उसको इतना भी पता है कि दो लोगों के बिना समूह नहीं बनेगा. ग्रुप इज समूह. सो अंडरस्टैंडिंग a person's behavior at an interpersonal level is also about social psychology, and that is called sociological social psychology. दो पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, psychological social psychology and sociological social psychology. It is just addition to what you will be seeing in your book, just an addition to make your understanding better. Noted? 2 points, psychological social psychology and sociological social psychology. अब इसके सिवाय हम सोशल साइकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? एटीट्यूड समझते हैं, किसी का क्या रवैया है, किसी के प्रति क्या एटीट्यूड फॉर्म हो रखा है. हम समझते हैं नॉर्म्स क्या हैं, बिकॉज आवर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉर्म्स. व्हाट आर नॉर्म्स? कैन एनीवन टेल मी? सही गलत की चिंता मत कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए. सॉरी, करेक्ट. So norms are certain unwritten rules. Laws भी होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में laws लिखे गए हैं. Laws are written rules, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. Yes, but norms are not written. हम किताब पढ़ के बिहेवियर नहीं सीख रहे हैं, right? We are following the constitution and abiding by the laws, by the rules. But in norms there are no written rules. You're not carrying a book everywhere with you to see okay how to behave, right? You are just following the behavior of other people, and perhaps you are learning by conforming with them, by copying them, right? Like right now you all are quietly listening to the lecture that is being delivered. कोई ये नहीं लिखा है कि आपको चुप ही बैठना है, सब चुप बैठे आराम से समझ रहे. So those are also norms. तो सोशल साइकोलॉजी में हम नॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, ग्रुप्स के बारे में भी पढ़ते हैं, दैट हाउ ग्रुप्स आर फॉर्म्ड, व्हाई ग्रुप्स आर फॉर्म्ड. हम ग्रुप के बिहेवियर के भी बारे में पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल सोशल लोफिंग एंड सोशल फैसिलिटेशन. आपको टग ऑफ वॉर का एक्सपेरिमेंट पता है? नहीं? तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था सोशल लोफिंग के बारे में समझने के लिए. सोशल लोफिंग क्या होता है? जब हम ग्रुप में काम करते हैं, सी दिस इज फॉर श्योर एवरीवन डज नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली ऑल द टाइम इन अ ग्रुप बिहेवियर. ये तो पता है, कोई बहुत ज्यादा काम करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, बहुत कम करेगा, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ इट. कॉम्पेंसेट तो हो जाएगा, लेकिन कोई बहुत ज्यादा करके, कोई बहुत कम करके. वी आर नॉट एबल टू सी हाउ मच एनीवन इज कंट्रीब्यूटिंग. दैट इज सोशल लोफिंग. टग ऑफ वॉर में क्या हुआ था? दो ग्रुप्स बनाए गए थे,
बीच में रोप थी, टग ऑफ वॉर क्या होता है ये समझ में आता है आपको? टू ग्रुप्स ऑफ पीपल आर गिवन अ रोप एंड दे आर टोल्ड टू पुल टुवर्ड्स देमसेल्व्स, दोनों तरफ से खींच रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता कि दोनों ग्रुप्स में कौन कितनी एनर्जी के साथ खींच रहा है, कितना कोई दम लगा रहा है। हमें ये पता है कि खींच रहे हैं। जिस तरफ लोग ज्यादा बेंड होंगे बाहर की तरफ, मींस दे आर पुलिंग इट मोर, जहां पे नहीं बेंड हो रहे हैं आगे की तरफ बेंड हो रहे हैं, मींस दे आर पुलिंग इट लेस, है ना। पर ये नहीं पता कि कौन कितना दम लगा रहा है, कोई ज्यादा कोई कम। दैट इज ऑल्सो सोशल लोफिंग। कार एक्सीडेंट हो जाए रोड पे, हमें नहीं पता कि कौन हेल्प करेगा विक्टिम को, कोई करता है कोई नहीं भी करता, बाईस्टैंडर इफेक्ट है वो। सो दे आर ऑल एग्जाम्पल्स इन सोशल साइकोलॉजी। कॉन्फॉर्मिटी में 5 फिनोमिनन का एक्सपेरिमेंट पता है आपको? 5 फिनोमिनन का एक्सपेरिमेंट किसी ने सुना है? ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट का? नहीं। पैरेलल लाइंस का एक्सपेरिमेंट, शेफरिन का, शेरिफ का सुना है एग्जाम्पल? यस यस। तो एक एक्सपेरिमेंट था, there were 3 parallel lines made and a group of people were asked that tell us which is the longest line among these 3. एक ने A बोला, एक ने B, एक ने C। पर क्या हुआ, जब ये नोटिस किया गया एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में, जो सबसे ज्यादा जो फॉलो कर रहे हैं लाइन बी को कर रहे हैं। क्यों? जस्ट आउट ऑफ कन्फॉर्मिटी। कई बार ग्रुप्स में क्या होता है, आपको पता है कि आप सही कर रहे हैं या गलत, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग इन अ पार्ट ऑफ ग्रुप यू हैव टू कन्फर्म। समटाइम्स इट्स लाइक इन टसल्स, इन इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स, you have to conform to your entire group even if you know you are not doing right. कई बार जैसे बुलिंग में होता है, आपने देखा होगा स्कूल में, you don't like to bully someone but just for the sake of being in the group you end up bullying. So ये भी group behavior है. So as of now I am introducing unit 1 in social psychology. What exactly is social psychology? Can anyone tell me? Study of our surrounding. तो environment क्या हुआ? Anyone? Study of social behavior. Anyone else? Forget right and wrong. First participate. Environment के according जो behavior में changes होते हैं उसकी study करते हैं. Okay. Anyone else? Even better. Who else can refine? Understanding social problem with scientific. We can incorporate that. Understanding the social factors. Social factors for what? In which context? In which context you want to understand social factors? जो हमें मतलब influence करते हैं social. Okay. तो इतने सारे लोगों ने अपने अपने पर्सपेक्टिव्स दिए, गलत कोई भी नहीं होगा, बिकॉज यू आर स्टिल एट अ वेरी बेसिक लेवल. पर सोशल साइकोलॉजी यू कैन जस्ट राइट व्हाट इट मीन्स. इट स्टडीज द रिलेशनशिप. सोशल साइकोलॉजी स्टडीज द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमंस with their social world. Social psychology studies the relationship of humans with their social world. Please remember, it is only social world. It is social psychology, so we are limiting our understanding of the relationship of humans only with their social world, not with environment. वो तो अलग अलग डिसिप्लिन्स हो जाएंगे फिर कि इंटर रिलेशनशिप सोशल साइकोलॉजी का किन किन के साथ है. अभी हम ये देख रहे हैं कि सोशल साइकोलॉजी क्या है.
एक क्लैरिटी दे रही हूं मैं। एक तो है सोशल साइकोलॉजी का रिलेशनशिप और किन डिसिप्लिन के साथ है, एक है कि सोशल साइकोलॉजी क्या है। हम पहले दूसरे वाले लेवल पे है कि सोशल साइकोलॉजी क्या है। सो इट स्टडीज द वे पीपल अंडरस्टैंड, यू कैन नोट दिस पॉइंट, इट स्टडीज द वे पीपल अंडरस्टैंड and deal with their social world. It studies the way people understand and deal with their social world and are influenced by the social and cultural experiences. Now let me make you understand this. By the social and cultural experiences. Let me make you understand this. ये तो सिर्फ अभी लिखवाया है. So we have to be in this social surrounding, we have to first understand that how it functions. अगर हम जंगल में जाके रहेंगे, क्या हम सरवाइव कर पाएंगे आज के तारीख में? नहीं ना। हम दिल्ली में हैं, हम इस क्लासरूम में बैठे हैं, हम सरवाइव कर रहे हैं। वी नो हाउ वी हैव टू कंडक्ट आवरसेल्व्स, वी नो हाउ वी हैव टू ट्रैवल, हाउ वी हैव टू स्पीक, हाउ वी हैव टू मैनेज आवरसेल्व्स, सब कुछ आता है हमको। वी कैन सरवाइव। जंगल में हम सरवाइव नहीं कर सकते। सो व्हाई दिस सो? बिकॉज वी आर वेल अट्यून्ड विद द सोशल सराउंडिंग। अगर हमें कहीं किसी की मदद मांगनी पड़े, वी नो हाउ टू कन्वे आवर प्रॉब्लम एंड टेक हेल्प। बेसिक चीज हमें पता है। सो वी आर एबल टू अडैप्ट एंड सर्वाइव इन दिस सोशल एनवायरमेंट। सो सोशल साइकोलॉजी इज ऑन साइंटिफिक बेसिस helping us understand that how people deal with their social world. Social क्यों? Because we are always connecting ourselves to other people around. We are never isolated. Please count out COVID and quarantine. Quarantine में भी हम कोई isolation में नहीं थे, phone पे बात करते थे. We were just physically away, out of safety measure, है ना? क्वारंटीन का मतलब ये नहीं हम बिल्कुल अकेले बैठे हैं, कट ऑफ हो गए हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, बस फिजिकली दूर है. सो वी आर नेवर आइसोलेटेड. एंड हाउ वी आर इन्फ्लुएंसिंग द कल्चर एज वेल एज हाउ कल्चर इज इन्फ्लुएंसिंग अस, ये भी वी हैव टू सी. Because we are not isolated, we have to follow norms, we have to move along with the society. So we are influencing people as well as getting influenced by people. अगर हम कहें क्रिश्चियंस दिवाली नहीं मनाते, कल्चर है, नहीं मनाते, उनका कल्चर क्रिसमस का है, और भी अलग उनके फेस्टिवल्स हैं, ईस्टर है और भी है. हम हिंदू दिवाली मनाते हैं, वो भी कल्चर का पार्ट है ना. तो ऐसा क्यों है? ये कल्चर हमारे बिहेवियर को कैसे इफेक्ट करता है? हम दिवाली पे ही ज़्यादातर दिए जलाते हैं, आज के तारीख में तो नहीं जला रहे. अगेन अ सोशल बिहेवियर. होली पे ही हम रंग लगाएंगे, आज के तारीख में नहीं लगा रहे. अगेन अ सोशल बिहेवियर. सो ऑल द टाइम वी आर इन्फ्लुएंसिंग as well as getting influenced by people around. Now, I am giving you a definition which was given by Alport in the year 1954. So, please note it down. Alport, A-L-L-P-O-R-T, Alport, 1954. Now, he defined social psychology as a scientific investigation. Please quote unquote, social psychology is the scientific investigation of how the thoughts, feelings and behaviors of individuals are influenced
by actual, imagined and implied presence of others. I am repeating this definition for those who have missed. Social psychology is the scientific investigation of how the thoughts, feelings and behaviors of individuals are influenced by actual, imagined and implied presence of others. So, either people are actually existing which is affecting our behavior. For example, if you know that VC is on the round in this area, do you think you will have the audacity to make noise and misbehave? Not at all, right? Or even if the head of this center is on the round, do you think you will be able to show any casual behavior or make noise or just have fun with friends in the corridor? No. There will be some fear, some pressure of having the best of code of conduct, right? This is what is influencing your behavior. Just by the thought that imagine VC is on the round, you will give your best foot forward to show your best of conduct, right? Be it teachers or students or any staff. So, how people are influencing our behavior, be it actual presence, imagined presence, just the thought itself will create some pressure of fear in you and you will give your best of the conduct just by this discussion. Or implied presence. Implied is saying that you are just imagining and thinking that how you will conduct. So, that is also about social psychology. So, another way to think about social psychology is in terms of range of topics studied, which I talked about in the beginning of this class, that there are various topics studied in this subject, in this branch of social psychology, such as aggression, pro-social behavior, attitude, behavior in groups, impression formation, social cognition, social perception. So many topics are studied to understand the human behavior in a social context, and that too with a scientific basis. So, it is never possible that person and the social situation are separable. They can never be separated. Whatsoever the situation is, you will be a part of some or the other situation. Right now you are sitting in the class, after a few hours you will be travelling again, that is also social situation, be it bus, car, metro, there is a change in the social situation. You are not isolated. Even in prison you will not be isolated. There also you will find people. You are never isolated. There is always some or the other social situation, because of which we have to study the social behavior in a scientific way. So, social psychology can be applied in organizations, corporate setups, that how is the work culture of the organization, how the employees are behaving, even if you have to know about how frequently employees take the break. It is not just the executive or administration level of staff, be it even the lowest level of staff, like the labor staff, like in factories. Even there, how frequently you are giving them breaks, what is their social behavior when they are at work, when they are having a break, and if you will not give them break, what will be the effect in their behavior? Irritation, tiredness, it will affect the quality of work. That is also about social psychology. Your work culture, how groups are formed in work,
That is also about social psychology. So now let us study how social psychology originated. एक दिन में तो नहीं बना, because in one day even we didn't become so advanced. There was a time when we were like monkeys. We are scientifically known as Homo sapiens, but we are much more advanced than them. कहने को तो blue whale and elephant are the largest animals, but still they are not as advanced as us in social psychology. Even animals have group behavior. It's not that animals are also always isolated. You can see on the street also, dogs are also never isolated. But it doesn't mean that their social behavior is as advanced as ours. You don't know whether they are forming attitudes or not, impression or not. Aggression, yes, they show because of Charles Darwin's survival of the fittest. But still, they are not as advanced as our social behavior. So, we have to now see that how social psychology originated. It started by William McDougall in the year 1908. So, I will be telling you the names, years and contribution of various researchers. No need to write essays, just write the points in the lecture, so that when you go back and see your SLM, you can associate, right? So, just write in points. First is William McDougall, year is 1908. McDougall, McDonald नहीं, McDougall, DOUGALL and MC उससे पहले Mac MC DOUGALL, McDougall. So, according to William McDougall, social behavior is started by innate tendencies. Yes, 1908. So, according to William McDougall, our social behavior is because of some innate tendencies. Innate tendencies, आपने personality में पढ़ा है id ego super ego, सिगमंड फ्रॉइड का दिया हुआ है. आपको ये भी पता है that id works on pleasure principle. आपको ये भी पता है कि id में life instinct, that instinct भी होता है. आपको ये पता है ego works on reality principle. Ego balances between id and super ego, and super ego works on morality principle. तो ये सारे innate tendencies ही है और इन्हीं id ego super ego से हमारा एक behavior बनता है. अगर आप ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहे हैं, आपको कोई परवाह नहीं है कि किसी को तकलीफ है, चोट पहुंच रही है, नुकसान हो रहा है, आप बस एग्रेशन दिखा रहे हैं impulsive होके. Certainly, your id is overpowering your ego and super ego, right? So, these are all your innate tendencies which are affecting your social behavior. हो तो आप surrounding में ही लोगों से घिरे हुए हो, your this behavior is affecting others. So, these are your innate tendencies. Now, second point, write down Floyd Alport in the year 1924. William McDougall 1908. Number 2 is Floyd Alport 1924. FLOYD Floyd Alport, ALLPORT. Now, Floyd Alport said that see, innate tendencies are not enough, because when we are talking about innate tendencies, we are just seeing our own selves. We are forgetting that others are also around, others are also influencing us. We are not so primitive. हम कोई जंगली जानवर नहीं है, हम सामाजिक हैं, है ना? We are social animals. सामाजिक जानवर है, जंगली जानवर नहीं है, right? No, it's a fact. Nothing to get amused. Fact है. आज आपको ये पता है
कि टेबल चेयर पे कैसे बैठते हैं, एक के पीछे एक बैठना है या पैरेलल बैठना है, आपको पता है। जंगल में ये कल्चर नहीं है। ये जो आपका सीटिंग पैटर्न है ये भी एक सोशल साइकोलॉजी का ही पार्ट है। सो फ्लॉयड ऑलपॉट ये कहते हैं दैट आवर बिहेवियर शुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय should be always an innate tendency is not necessary. We are surrounded by people, perhaps our behavior is also getting influenced because of people, and we are also influencing their behavior. Today I am standing here delivering a lecture right now. It is influencing your behavior, that is why you are quietly listening. Your queries are influencing my behavior, that is why I am answering. So there is always a mutual connect in influencing the behavior. And he has also studied human behavior by understanding facial expressions. एक छोटा सा बच्चा भी facial expression समझ जाता है. You show big eyes and say no, वो समझ जाएगा ये काम नहीं करना, it's danger, it's harmful, डांट नहीं खानी. उसको हंस के कुछ कहो, वो एकदम समझ जाएगा ये प्रो सोशल बिहेवियर है, इट्स इन फेवर ऑफ द चाइल्ड. तो फेशियल एक्सप्रेशंस भी एक सोशल बिहेवियर का ही पार्ट है. इट इज अ नॉन वर्बल क्यू, कोई भाषा नहीं है, सिर्फ एक एक्सप्रेशन है. स्ट्रेस है, अग्रेशन है, हैप्पीनेस है, सॉरो है. अगर आप प्लूचिक का भी स्टडी देखेंगे उसमें भी सिंपल इमोशंस हैं, कॉम्प्लेक्स इमोशंस हैं. तो जो भी हमारा फेशियल एक्सप्रेशन है, नॉन वर्बल बिहेवियर है, वो भी एक सोशल बिहेवियर में आता है. सोशल कन्फॉर्मिटी ऑल्सो वाज स्टडीड बाय फ्लॉयड ऑलपॉट, एंड हाउ द ऑडियंस कैन इन्फ्लुएंस आवर परफॉर्मेंस ऑल्सो हैज बीन अंडरस्टूड इन सोशल बिहेवियर. क्योंकि देखिए ऑडियंस भी एक ग्रुप है, मॉब भी एक ग्रुप है. मॉब आप देखेंगे जैसे किसान आंदोलन में पहले याद है बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, याद है, बहुत कई बार लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, पानी भी फेंकना पड़ा था. ऑल दैट वाज मॉब. किसानों का मॉब ही तो था वो. मॉब क्या होता है? व्हेन अ लार्ज ग्रुप ऑफ बिहेवियर, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एंड अप शोइंग एन एंटी सोशल बिहेवियर. ठीक है, ऑडियंस है, यू आर परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, पीपल आर लिसनिंग टू योर परफॉर्मेंस, दे आर सीइंग योर परफॉर्मेंस, quietly they are seeing, that is audience. Audience are more structured group of people who are coming for a purpose. Mob is more towards the negative side, they are showing more of aggression, violence. So there are different groups. Team is also a group, right? It's not just a group of friends. Team is a group, but they all have a common skill. Football team अगर है, cricket team है, they all know one thing in common, playing the game, be it cricket, be it football. Group है लेकिन एक common skill सब में होती है, that is a team. Audience है, they are having another common purpose to see the performance, to behave in a structured way. Unstructured group है कि चलो like there is an accident, so many people have come, purpose कुछ नहीं है उनका, आए देखे और गए. They just saw okay some victim is lying, there is some damaged part on the road, they came, not everyone will attend to the victim and they will go. That is an unstructured group only. Now another point is, since the Second World War, psychology has expanded into virtually every area. Psychology has been developing right after the Second World War, especially social psychology. So in most of the places of Europe except for United Kingdom, social psychology has been evolving. And within social psychology there are two more parts within social psychology which I talked about: psychological social psychology and sociological social psychology. साइकोलॉजिकल में आपके अंदर क्या हो रहा है, क्या सोशल बिहेवियर डेवलप हो रहा है, दैट इज स्टडीड.
सोशियोलॉजिकल सोशल साइकोलॉजी में इंटरपर्सनल है और वो दिख रहा है, एक्सप्लिसिट है. साइकोलॉजिकल इज इंट्रापर्सनल, लाइक इंप्रेशन फॉर्मेशन, एटीट्यूड फॉर्मेशन, अग्रेशन. ये सब आपके अंदर है, जरूरी नहीं है सबको हर वक्त दिखे. दैट इज इंट्रापर्सनल लेवल एंड साइकोलॉजिकल सोशल साइकोलॉजी. ग्रुप बिहेवियर, social facilitation, social loafing. Most of the times the group behavior or interpersonal level of understanding social psychology is the sociological social psychology. Society is at interpersonal level, तो social psychology का sociological part है वो. Now note down another name with the year, Gabriel Tard, Gabriel, Gabriel Tard, in the year 1898. According to this researcher, social psychology should be preserving the scientific understanding of human behavior at interpersonal level. So you are understanding the human behavior, but very scientifically. It is not that our behavior is always haphazard. ये नहीं हम कभी भी कुछ भी बिहेव कर रहे हैं, फिर तो abnormality हो जाएगी. वो सोशल साइकोलॉजी नहीं रहेगा, वो क्लिनिकल साइकोलॉजी हो जाएगा, abnormal साइकोलॉजी हो जाएगा. एंड दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ साइकोलॉजी ओनली, पर हम पढ़ रहे हैं सोशल साइकोलॉजी. सो दैट इज वाई इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग the human behavior, that to normal behavior on a scientific basis, that if at all we are behaving, why so? Suppose if I give a tight slap to anyone, you will not laugh or you will not give a tight hug, thank you ma'am. You will also think twice that why it happened, or I should also give back a tight slap and not show come ahead with the friendship's intention, है ना. थप्पड़ मारने में कोई फ्रेंडशिप तो नहीं करेगा. So we are understanding the normal behavior of human on a scientific basis. Then we talked about Floyd-Allport already. After Floyd-Allport comes Auguste Comte. August के आगे E लिख देना. Comte. Year is 1898. Auguste Comte in the year 1898, very important, he is also known as father of social psychology. See, there are two fathers, father of social psychology, sorry, Auguste Comte. August के आगे E लिखना, Comte, C-O-M-T-E, 1898. Auguste Comte is also known as father of social psychology. There are two fathers, one is social psychology, one is applied social psychology. As of now we are seeing Auguste Comte, 1898, father of social psychology. 3 points. Now what he has to say, according to Auguste Comte, the experiment done on social facilitation is considered as the first experiment in social psychology. Experiment done on social facilitation is considered as the first experiment in social psychology. Social facilitation, साइकिलिंग की रेस चल रही है, जहां जहां ऑडियंस हैं वहां साइकिलिस्ट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फटाफट पेडल चल रहे हैं साइकिलिस्ट के और आगे बढ़ रहे हैं. ऑडियंस नहीं है, थोड़ी स्पीड घट रही है, ऑडियंस जहां है थोड़ी स्पीड बढ़ रही है. Why? Because they want to give their best of the performance in front of people who are observing them. So audience की इफेक्ट क्या है participants पे, that is about social facilitation. Then we had already talked about Muzaffar Sharif, right? In the year 1930,
Muzaffar Sharif, year is 1930. There was a book written by Muzaffar Sharif, and that is The Psychology of Social Norms. ये बहुत जरूरी है, MCQ में आ सकता है. In the year 1936, Muzaffar Sharif, 1936, book was written which is Psychology of Social Norms. And Muzaffar Sharif also conducted an experiment on autokinetic effect. 2 points है इसमें. Book लिखी थी Psychology of Social Norms पे. Year was 1936 and experiment of autokinetic effect was conducted by Muzaffar Sharif. 3 points. Then comes next experiment, next researcher, sorry, in the year 1938, John Dollard. John Dollard had formed the frustration-aggression hypothesis. 1938. John Dollard, डॉलर के आगे डी है, हाँ, John Dollard, 1938. And what was the contribution? Frustration, aggression, hypothesis. Does anyone know what is it? Just give it a try. Frustration, aggression, hypothesis. John Dollard, 1938. Frustration, aggression, hypothesis. Does anyone know what is this? फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन पे कोई हाइपोथेसिस होता है अनुमान, तो कोई assumption क्रिएट करना. Nothing wrong in your trying. Try. किसी एग्रेशन पे कैसे बंदा फ्रस्ट्रेट हो रहा है उसका अनुमान लगाना. Close to this fact. Anyone else? Correct. So, in frustration aggression hypothesis, we are considering that frustration can lead to aggression. Frustration दिखाते दिखाते आपको गुस्सा भी आ जाता है कई बार. When you are too much frustrated, कई बार आपको गुस्सा आता है, फिर आप सोचते हैं मैंने क्यों ना गुस्सा किया, उसकी वजह से आप इरिटेट हो जाते हो. You don't feel very pleasant after you are showing your anger. That is about frustration aggression hypothesis. John Dollard, 1938. Yes? Hypothesis. According to research methods in psychology, hypothesis is a tentative statement that a researcher wants to prove. So, whether a hypothesis is proved to be true or false, it doesn't mean the research goes in vain. Research ही रहेगा. False है तो भी कम से कम research से पता चला कि hypothesis is false. True है तो भी research से ही पता चला. But that is about research methods that I am explaining to you. इस hypothesis का नाम है frustration aggression hypothesis. Now Gordon Allport, yes, Gordon Allport, in the year 1954, Gordon, Gordon, Allport, Allport. Gordon Allport in the year 1954 had also done a lot of research work on prejudice. Prejudice पता है क्या है? Prejudice. Does anyone know what is prejudice? Unbiased. Bias, not unbiased. किसी चीज के बारे में अपनी धारणा. Stereotypical हो जाना. इंडिया में कास्ट सिस्टम की वजह से बहुत प्रेजुडिस डिस्क्रिमिनेशन होती है. अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी कहाँ से आई? ये अनटचेबिलिटी की डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से आई? प्रेजुडिस की वजह से. किसने कहा था, किसने शुरू किया था कि ब्राह्मण क्या है, अनटचेबल्स क्या है? We are not born with it. It has been imposed, right? So that prejudice is in the thought. Remember, prejudice is at cognitive level, discrimination is at behavioral level.
we are showing our prejudice in our action, which is called discrimination. Discrimination prejudice से ही आया है. हमारी सोच में prejudice है, इसलिए हमारे behavior में उसका discrimination दिख रहा है. Why I am talking about prejudice and discrimination? Because Gordon Allport had done research work in the year 1954 on this issue. In the year 1917, 1917, Lewin, Lewin, in the year 1917, Lewin did a lot of publishing work, research work on the advancements of field of personality. क्यों? Because see, we are not in isolation. हमारी जो personality develop हो रही है बचपन से अब तक, वो भी एक social world के वजह से ही develop हो रही है. भाई बहन चाहे एक ही माँ बाप से हैं, लेकिन दोनों का personality, दोनों का conduct अलग होता है, right? Even if they are twins, it is not necessary that even identical twins should always show the same personality. शक्ल से एक जैसे ज़्यादातर दिखते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि हर वक्त एक जैसे ही हो. There will be a lot of positive correlation in their behavior. There will be a lot of similarity in their behavior. But थोड़ा बहुत तो difference होता ही है. And your personality is getting influenced by your social world. Now, note this point down, very important point. Kurt Lewin, K-U-R-T, Kurt Lewin is considered as a father of applied social psychology. Father of applied social psychology. Who was the father of social psychology? Recap. Auguste Comte. And now Kurt Lewin is father of applied social psychology. I told you there were two fathers. Social psychology, applied social psychology. So applied क्यों है? Because you very well know what is basic, what is applied. Introduction में पढ़ा है किसी ने? Yes, ma'am. What is the difference between basic and applied? मैं बेसिक में किसी फिनोमेना को ढूंढते हैं और अप्लाइड में हम उस फिनोमेना का यूज करते हैं. See, basic is about theory. सोशल साइकोलॉजी में अगर अलग अलग तरह के हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं एटीट्यूड के ऊपर या किसी एग्रेशन के ऊपर, दैट इज थ्योरेटिकल. बट इफ वी आर सीइंग व्हाट आर द इश्यूज कमिंग अप, उसके हम सॉल्यूशंस भी ढूंढ रहे हैं. इशू तो है ही, इशू को समझने के बाद हम उसके सॉल्यूशंस भी ढूंढ रहे हैं. दैट इज अबाउट अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी. We are applying the principles of social psychology in our everyday life and looking for solutions. We are seeing for a problem focused approach to solve the social issues. That is applied social psychology. And Kurt Lewin is the father of applied social psychology. Year is 1917. 1917. One more contribution of Kurt Lewin. He formed an important organization which is called Society for Psychological Study of Social Issues. Society for Psychological Studies of Social Issues. This organization was established by Kurt Lewin. Now, in the year 1954, Leon Festinger, L-E-O-N, Leon Festinger, F-E-S-T-I-N-G-E-R, there was
a concept called cognitive dissonance, which was developed by Leon Festinger. Cognitive dissonance. DISSONANCE, and spelling of Leon Festinger is LEON, Leon, FESTINGER. 1954. Contribution is cognitive dissonance. Does anyone know what is cognitive dissonance? Attitudes में आता है. Okay. Anyone else who can refine it a bit more? मैम dissonance means Rejection. अच्छा. ideas theoretical rejection. Anyone else who can try cognitive dissonance? I say pan masala is dangerous for health. I eat pan masala. What is that? I say exercising is good for health. I exercise every day. That is cognitive consonance. Dissonance में हम कहते कुछ है करते कुछ है. Consonance में हम जो कहते हैं वो करते हैं. हाँ, rational. देखिए, irrational तो कुछ भी नहीं है. Even an alcoholic knows that alcohol is dangerous for health. फिर भी उसका addiction है. पान मसाला, स्मोकिंग, अल्कोहल, कुछ भी कह लीजिए. प्रॉब्लम इज यू नो द फैक्ट बट यू आर नॉट अडहेरिंग टू इट. हाइपोथेसिस कहाँ है? ये तो एक हाँ, हिपोक्रेसी ज्यादा ही सोशल लेवल पे, हम इंट्रापर्सनल पे भी बोल रहे हैं. सो यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी एडिक्शन इन दिस. You know that you are not supposed to do, it's harmful for your health, still you are doing. That is dissonance. ये क्लास 12th का एग्जाम्पल है पान मसाला का. अगर किसी ने 12th में साइकोलॉजी पढ़ी है, भूलना नहीं है. कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट. Then in the year 1958, Fritz Heider, लियोन फेस्टिंजर, फ्रिट्ज हीडर, ये सब एटीट्यूड्स में आ रहे हैं. FRITZ, फ्रिट्ज, HEIDER, हीडर. 1954, sorry 1958. 1954 was Leon Festinger. In the year 1958, Fritz Heider had written a book on psychology of interpersonal relationships. 1958, Fritz Heider, the book is Psychology of Interpersonal Relationships. It made the foundation for attribution theory. And it explains that why the people are behaving the way they are. Why people are behaving the way they are behaving. जो भी behavior है, ऐसा क्यों है? In the year 1965, Society for Experimental Social Psychology was developed. In the year 1965, Society for Experimental Social Psychology was developed. अब जितने भी हम सोशल साइकोलॉजी के थ्योरीज लेके आए हैं, हम जैसे सोशल फैसिलिटेशन है,
कॉग्निटिव डिसोनेंस है, या ग्रुप का कोई एक्सपेरिमेंट है, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस है, ये सब एक्सपेरिमेंट्स ही तो रहे हैं। ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट है, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स ही तो हैं। सो वी नीड सम सोसाइटी फॉर सच एक्सपेरिमेंट्स, कि कौन करेगा, किस टॉपिक पे एक्सपेरिमेंट्स होंगे। वी कांट, इवन इफ इट्स ऑन सोशल साइकोलॉजी, वी कांट हार्म एनीवन। कहने को सोशल साइकोलॉजी है, पर हम कोई हार्मफुल बिहेवियर नहीं दिखा सकते जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। सो देयर इज अ सोसाइटी फॉर एक्सपेरिमेंटल सोशल साइकोलॉजी। So in the year 1970s, yes, please note it down. In the year 1970s, there was a lot of contribution in experimental social psychology. Remember that. There is nothing very specific, but in 1970s, lot of contribution was made in experimental social psychology. Lot of developments were made, lot of experiments were conducted to understand the social behavior on a more scientific note. Experiments ही होंगे तो scientific कहाँ होगा? That is why experiments were needed. Now in the year 1936, Society for Psychological Study of Social Issues was developed. Society for the Psychological Study of Social Issues was developed in 1936. Because we need some autonomous bodies to understand these issues, take up these issues, to make experiments, for these autonomous bodies are needed. The Society for Psychological Social Issues 1936 was developed to understand the social issues which can be brought up and understood and solved. Thank you.